अगर कोई कैरियर नहीं है, then you are allowed to do the transmission. Okay. समझ में आई बात कि अगर कैरियर है तो ट्रांसमिट नहीं करना है, और अगर कैरियर नहीं है if there is carrier, if signal is there, carrier is there, if carrier sense, okay, or if carrier sense kiya, if you find the signal is there, then do not do. And if no signal, then do transmission. So obviously, अगर सिग्नल है तो आप ट्रांसमिट करेंगे तो कोलाइड हो जाएगा दूसरे वाले, राइट? तो ये प्रोबेबिलिटी अवॉइड कर दी कि बाय सेंसिंग द मीडियम द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, कि अगर सिग्नल ऑलरेडी ट्रांसमिट हो रहा है तो आप ना ट्रांसमिट कीजिए क्योंकि पक्का कोलिजन हो जाएगा. ओके, सो दैट प्रोबेबिलिटी रिड्यूस. पहले क्या था कि आपने कहा कि नहीं, हम हमारे पास फ्रेम है, हम ट्रांसमिट करेंगे, कुछ हो, कोई सिग्नल हो या ना हो, तो उसको रिड्यूस कर दिया इतना कि कैरियर सेंस में. तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सिस, कैरियर सेंस रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी कि भाई अगर ऑलरेडी कैरियर है मीडियम के ऊपर, then it is not going to do the transmission. Okay. अब नेक्स्ट पोर्शन क्या आया? नेक्स्ट पोर्शन है इसका CD, कोलिजन डिटेक्शन. कोलिजन डिटेक्शन, अगर आपने कैरियर सेंस किया, स्टिल देयर इज अ चांस दैट कोलिजन टेक्स प्लेस. क्यों? ये वायर है, N1 ने कैरियर सेंस किया, ये N4 है. N1 ने कैरियर सेंस किया and there was no carrier here, so it started transmission. तो फिर कोलिजन क्यों हो जाएगा भाई? N1 ने सेंस कर लिया ना चैनल, चेक की सिग्नल नहीं है वायर के ऊपर, तो उसने ट्रांसमिशन शुरू किया. तो इज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन? अगर हमने N1 से ट्रांसमिशन शुरू किया तो अगर कोलिजन होता है तो क्यों हो सकता है? क्योंकि कोलिजन डिटेक्शन का मतलब है कि कोलिजन अगर डिटेक्ट होता है तब क्या करें. तो बट फर्स्ट टेल मी, व्हेन नोड N1, उसको 100 बिट्स ट्रांसफर करनी थी, 100 बिट्स का फ्रेम है. सो व्हेन इट स्टार्टेड द ट्रांसमिशन, स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन. बाय उसने तो ऑलरेडी सेंस किया और वहां पे कुछ नहीं था, कोई सिग्नल नहीं था वायर के ऊपर, तो फिर ट्रांसमिशन शुरू किया, बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन. बाय तभी डिटेक्ट होगा. Sir, it can be a case when two different transmission nodes sense the start the carrier sensing at the same time instant. Okay, the first case is, that's fine. First case is N1 ने सेंस किया और N4 ने सेंस किया at the same time. So they didn't find any carrier, any signal over the medium, and they started the transmission. So collision will have happened. This is first thing. Now tell me, if still कुछ और
प्रोबेबिलिटी भी है कि N1 ने सेंस किया और N4 ने साइमल्टेनियसली सेंस नहीं किया, थोड़ा सा फर्क है, तब भी पॉसिबिलिटी है कोलिजन की या नहीं? ये ठीक है तुम्हारी बात कि अगर N1 and N4 या any two nodes will at the same instance of time, अगर वो सेंस करते हैं चैनल को और ट्रांसमिशन शुरू कर देते हैं, सेंस करते हैं और उनको दोनों को नहीं मिलेगा कैरियर या सिग्नल, तो वो ट्रांसमिट करना शुरू करेंगे तो कोलिजन हो जाएगा. दैट्स फाइन. नाउ टेल मी N1 सेंस द सिग्नल चैनल और N4 ने उस वक्त नहीं सेंस किया, थोड़ा सा देर में किया, तो पॉसिबिलिटी है या नहीं कोलिजन की? क्यों भाई, पॉसिबिलिटी कोलिजन की है या नहीं? अगर नोड एनीबडी, अगर N1 ने सेंस किया और सिग्नल नहीं है, N4 ऑल्सो सेंस, लेकिन आफ्टर सम टाइम, so is there possibility of collision? कि कुछ टाइम बाद अगर ट्रांसमिट करे तो कोलिजन की पॉसिबिलिटी है N4 और N1 के सिग्नल्स की या नहीं? Sir, maybe the transmission signal has become weak. कौन बोल रहा है? मोहित. Yes, sir. हाँ बोलो बेटा. Sir, maybe the transmission signal has become weak till I mean there can be an error in carrier sensing because the signal has become. So you want to say कि transmitted signal weak हो गया और N4 ने सेंस किया तो उसको मिला नहीं सिग्नल वहां पर? Yes, sir. Okay. Anybody else? किसी के दिमाग में कुछ और आ रहा हो अगर? मुझे एक चीज बताइए, ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग तो फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ के आए हैं, मैं तो अब भूल गया फिजिक्स को, कि when N1 ट्रांसमिटेड अ सिग्नल, मान लीजिए N1 ने इस सिग्नल को ट्रांसमिट किया, ये सिग्नल है, and I am saying after some time, say after time t, N1 ने ट्रांसमिट किया at t, टाइम t शुरू किया, and at t plus t1 टाइम N4 ने चेक किया, तो within t1 टाइम is it possible कि N4 को फेडिंग वाला छोड़ दें? अगर मान लें कि N1 से जब तक सिग्नल N4 तक पहुंचेगा तो इतना रहेगा कि N4 कैन डिटेक्ट. एक्चुअली जो वायर की डिस्टेंस है वो इतनी रखी जाती है कि N4 कैन डिटेक्ट. अगर N4 को, मान लीजिए N1 इज डूइंग ट्रांसमिशन टू N4 को ही भेज रहा है वो, ओके, सो डिस्टेंस वायर की इतनी रखी जाती है कि दैट सिग्नल विल नॉट डिटोरिएट टू एक्सटेंट कि वो डिटेक्ट ना हो सके. अगर 1 भेज रहे हैं तो 1 डिटेक्ट हो जाएगा N4 पे, ये मान लीजिए. तो जो मोहित कह रहा था उसको वो पॉसिबिलिटी एक्चुअली नहीं रहती है, बिकॉज जो वायर है उसकी डिस्टेंस इतनी चूज की जाती है कि द फारेस्ट नोड, जो सबसे दूर नोड है, वो भी उस सिग्नल को रिसीव कर सकता है. ओके,
but still there is a possibility of collision. Reason is very simple कि आपने सिग्नल जो ट्रांसमिट किया है, N1 has transmitted this signal which is say 1. So this 1 will move and will come at N1 in time. यहाँ T से शुरू किया और T1 टाइम कुछ लेगा कि नहीं ये यहाँ तक पहुंचने में सिग्नल, भले ही वो इलेक्ट्रिक सिग्नल है, will take some time or not. ऐसा तो नहीं है ना N1 ने इस 1 को ट्रांसमिट किया और ये तुरंत ही विदाउट एनी गैप, विदाउट, चाहे वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 2/3 ऑफ लाइट, इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू कि चाहे आप कॉपर वायर हो या ऑप्टिकल फाइबर हो, 2/3 ऑफ लाइट की स्पीड से सिग्नल ट्रेवल करता है, बट देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन N1 एंड N4. तो चाहे टाइम T1 कितना भी कम हो, कुछ तो होगा ना. When N4 is checking कि भाई कोई सिग्नल तो नहीं है वायर पे, और उसने टाइम T1 के बाद चेक किया, तो इस T1 में कुछ टाइम तो होगा ना जिसमें कि सिग्नल पहुंचेगा यहां तक. तो अगर कुछ टाइम लगेगा कि नहीं सिग्नल को पहुंचने में, पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि N1 में लगेगा ना थोड़ा टाइम, आपने है ना, कुछ टाइम तो लगेगा सिग्नल को पहुंचने में. तो अगर T1 में पहुंचता है यहां तक, तो अगर N4 checks the medium before T1, ठीक है ना, अगर T1 के पहले उसने चेक किया, लाइक N1 ने ट्रांसमिट किया एंड N4 ने, जब ये सिग्नल यहां से शुरू हुआ और सिग्नल यहीं पर था, तो ऑब्वियसली T1 से कम टाइम होगा ना. एट दैट टाइम इफ N4 चेक्स, तो उसको सिग्नल यहां नहीं मिलेगा. If it checks before T1, then it's not going to sense कि भाई कैरियर कोई है, right? But if it checks after T1, then it will find signal. क्योंकि please remember कि यहाँ सिग्नल आ रहा है, इसके बाद क्योंकि 100 बिट्स हैं, so after next bit मान लीजिए 0 है और नेगेटिव से डिनोट करें, तो नेक्स्ट बिट है, फिर अगर 1 है, तो इस तरह से बिट्स जो हैं वो लगातार ट्रांसमिट हो रही है till all 100 bits are transmitted. Okay, so sequence of transmission of bits is already there. और प्लीज रिमेम्बर, जब आप चेक कर रहे हैं तो 2 बिट के बीच में भी गैप रहता है. 2 बिट के बीच में भी गैप तो रहेगा ना, ऐसा तो हो नहीं सकता, वरना आप चेक कैसे करेंगे, 2 सिग्नल के बीच में गैप रहेगा, राइट. कंटिन्यूअस सिग्नल भले ही आ रहा है, बट there will be some gap between 2, right. So when you are checking over the wire, you would be checking for some time period, जो कि गैप के बराबर तो कम से कम होगा ही होगा. So you cannot check कि आपने, आप ये नहीं कह सकते कि आपने जो 100 बिट्स पीछे भेजी है उसके बीच में चेक कर लिया तो नहीं मिलेगा सिग्नल. नो, that is not possible. When you are checking for is there signal, you would be checking for some time period, and that time period would be obviously more than the gap between 2 bits. Okay, so if N4 checks before time T1 अगर मिनिमम टाइम है जो कि N1 से N4 तक जाने में लगता है, राइट, अगर उसके पहले उसने चेक किया, then it is not going to find a signal over the medium. अगर उसके बाद चेक किया तब तो ठीक है, अगर बाद में चेक करता है then it will find there is a signal, so N4 is not going to do the transmission. वो तो कोई दिक्कत ही नहीं. The possibility of collision is still existing even if the nodes are sensing the carrier. The possibility of
collision is still existing. The reason is when N4 check the medium and before T1 die. So it will find there is no signal. So N4 can also start its transmission. N1 का transmission यहाँ तक पहुंचा और N4 ने भी transmit कर दिया. So at this some point it is going to collide. Okay. So first thing is collision. Collision, even if the carrier sense is there, still there is a possibility of collision, because if the farthest node which is doing the transmission or any node which is doing the transmission, there is some time gap in which the signal will reach to that node, and if the node sense the carrier before that time gap, then it will find there is no signal over the medium and it will start doing the transmission, and transmission will collide with the transmission of other node. ठीक है कि नहीं बात? So a collision will take place. Even if we are doing the carrier sense, even if the nodes are doing the carrier sense, collision can take place. Now, it has been kept that node will detect the collision. So the nodes which are doing the transmission, they are doing the transmission and they are trying to detect the collision also. Okay. So collision detection, CD. Okay. So collision is going to be detected. So first thing is collision will happen, and when a collision will happen, this is node N1 and this is node N4. Suppose or collision हो गया. Now this collision को डिटेक्ट करना पड़ेगा. और कोलिजन डिटेक्ट कैसे होगा? ऑब्वियसली जो कोलिजन है इसमें नॉइस होती है. ये अगर आप इस तरह से देखिए, ये सिग्नल अगर इतना है +5 है, तो यहाँ पर कोलिजन का सिग्नल जो है वो ऑब्वियस है कि वो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ज्यादा हो जाएगा. +5 -5 नहीं रहेगा if the signal collides. So this is to be detected now. पहली बात है collision हो गया और collide signal का जो सिग्नल होगा वो फर्क टाइप का होगा, अलग टाइप का होगा. ओके, उसमें कुछ अलग टाइप की, and that is to be detected now. और डिटेक्शन के लिए क्या करना होगा? फर्स्ट थिंग इज आप लिसन कर रहे हो. जो आदमी ट्रांसमिशन नहीं कर रहा, द नोड विच इज नॉट ट्रांसमिटिंग इज नॉट लिसनिंग, सो इट इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू डिटेक्ट द कोलिजन. हु विल बी लिसनिंग? द वन हु इज डूइंग द ट्रांसमिशन. प्लीज रिमेंबर, जो ट्रांसमिशन कर रहा है वही लिसन भी करेगा, तभी कोलिजन डिटेक्ट होगा. तो पहली कंडीशन है कि द नोड, इफ देयर आर टू नोड्स, ऑब्वियसली दो नोड ट्रांसमिट करेंगे तभी कोलिजन होगा. एक नोड ट्रांसमिट करेगा तो कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि नोड एक जब सिग्नल को रख रहा है तो उसके बाद सेकंड बिट को, फिर थर्ड बिट को एक कुछ टाइम गैप के बाद रखा जाता है. ऑब्वियस है, कुछ टाइम गैप तो होगा ना दो बिट्स के बीच में. विल डू द ट्रांसमिशन. तो एक नोड की बिट्स जो जा रही हैं वो एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेंगी. ठीक है ना? So two nodes will be doing the transmission, and the collision, the possibility of collision is only when two or more than two nodes are doing the transmission. Now when they have to detect the collision, this means they are doing the transmission. At that time they need to listen also for the collision. अब ये देखिए, ये कोलाइड सिग्नल है. दिस कोलाइड सिग्नल
there is a possibility that this collide signal do not reaches to all the nodes which are doing the transmission. आगे चलें, अगला पेज खोल लें, दो पेज बात समझ में आ रही है कि these two nodes are doing the transmission, N4 and N1. A collision has happened, collide signal. और कोलिजन मान लीजिए, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा दें, कोलिजन मान लीजिए यहाँ होता है, सपोज collision takes place somewhere here, यहाँ पे होता है मान लीजिए कोलिजन, ये है कोलाइड सिग्नल, कोलाइड सिग्नल. Now this collision collide signal, it is possible that may not reach to N1. Why it is possible? क्यों संभव है कि कोलाइड सिग्नल इवन डू नॉट रीचेस टू N1? अभी एक ही मान लीजिए पहले आप. See, if a normal signal is there like 0 and 1 from N4, it will definitely reach to N1 because the distance has been chosen in such a way so that even if obviously when a signal moves over the wire, over the medium, it deteriorates. वो तो होता है, रेजिस्टेंस है मीडियम में, जब भी सिग्नल मूव करेगा तो वो डिटोरिएट होगा. बट द डिस्टेंस is of the wire is chosen in such a way that the receiving node, even if it is at the farthest distance, it can detect that. इतनी डिस्टेंस का वायर की डिस्टेंस इतनी ही रखी जाती है, उससे ज्यादा नहीं रखी जाती. ज्यादा रखेंगे तो फिर डिटेक्ट नहीं हो सकता. Okay, so if a normal signal is coming from N4 to N1, N1 is able to detect. But see, if a collide signal is there, then there is a possibility that this signal, this collision is happening near N4, but it is far away from N1. And there is a possibility that that collide signal do not reaches to N1. Now tell me why. Normal signal पहुंच रहा है, 1 आपने भेजा N4 से, 1 पहुंच रहा है N1 तक, लेकिन ये कोलाइड सिग्नल जो है ये नहीं पहुंच रहा है N1 तक. ये क्यों हो सकता है? तो बता सकता है? तो फिजिक्स का क्वेश्चन है भाई, इसका कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं. सर मे बी सिग्नल एक दूसरों को कैंसिल कर रहा है. हाँ, लेकिन वो तो बात ठीक है सर. तो कैंसिल करने में ऐसी क्या चीज हो गई सिग्नल के अंदर कि वो N1 तक नहीं पहुंच रहा? ये तो दिख रहा है ना, ये कोलाइड सिग्नल है, नॉर्मल सिग्नल ये था तुम्हारा, और ये कोलाइड होने के बाद जब दो वेव दोनों तरफ से कोलाइड की तो ये बन गया. तो कैंसिल सर डाइवर्जेंट इंटरफेरेंस हो गया. डाइवर्जेंट इन इंटरफेरेंस, डाइवर्जेंट इन इंटरफेरेंस का कुछ मतलब जरा समझाओ यार, मुझे तो समझ में नहीं आया. सर वो एम्पलीट्यूड कैंसिल कर देता है ना, जब अपोजिट डायरेक्शन से वेव्स आती हैं तो एम्पलीट्यूड कैंसिल कर दिया तो छोटा हो गया ये, है ना सर. मतलब इक्वल अमाउंट के एम्पलीट्यूड रहेंगे तो वो 0 कर देंगे ना, कैंसिल करके 0 हो जाएगा. तुमने कभी देखा है कि जब वो तालाब में वेव देखिए, इधर से आती है इधर से आती है, तो वो कैंसिल करके छोटी हो जाती है कि बड़ी हो जाती है, ऊंची हो जाती है? क्यों? Sir, yeah, it actually depends upon the on the crest and the trough, sir. So if the crest meets with the trough, so I guess it will cancel it, and if the crest meets with the crest, then it will superpose and form a
wave of larger size. और कोई बता सकता है? एनी आइडिया, एनीबॉडी? कि सिग्नल में ऐसा क्या हो गया, देखिए, कि वो पहुंच नहीं रहा N1 तक. What happened in that signal? आप लोगों ने कभी रिसर्च की तालाब में वो वेव कभी देखी हो, इधर से आ रही है दूसरी तरफ से आ रही है, या नदी में चलती हुई दो तरफ से वेव देखी हो? वही है सिग्नल बेसिकली. जब दो डायरेक्शन से, अगर कभी जिन लोग जो साउथ में रहते हैं उन्होंने समुद्र में देखी हो, दो डायरेक्शन से वेव आती है, वही तो क्या होती है, एकदम ऊंची उठती है कि नहीं उठती है टकराने के बाद? वैसे ही कोलिजन में भी होगा सिग्नल के. आइडिया सी बहुत सिंपल सी बात है कि जब सिग्नल मूव कर रहा है इफ दिस डायरेक्शन, सो व्हेनेवर सिग्नल इज मूविंग, तो जो वेलोसिटी है सिग्नल की उसमें दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. So after the collision, this vertical component increases, but horizontal component of the velocity decreases. जब horizontal component velocity में है ही नहीं या कम है, this is the reason why it is not reaching up to the node N1. Velocity होगी तभी पहुंचेगा ना सिग्नल. हम कहते हैं ना लाइट की स्पीड से चल रहा है, तो स्पीड उसमें डायरेक्शन नहीं होती, यही है ना. वेलोसिटी उसमें डायरेक्शन होती है, जो चल रहा है किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो डायरेक्शन, तब उसको वेलोसिटी बोलेंगे ना. सो व्हेन टू सिग्नल्स कोलाइड, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिक्रीजेस, वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीजेस. तो वो आपने देखा होगा कि वेव ऊंची उड़ जाती है, बट इट कैनॉट मूव a larger distance. ठीक है कि नहीं? मतलब मेरे ख्याल से यही है. बाकी किसी को कुछ और समझ में आता हो तो बताएं. Okay, so it do not reaches to N1, right? But it is reaching to N4. Okay, so N4 detects that there is a collision. So please remember one thing: N4 is doing the transmission, and then only it can detect that collision has happened during the transmission. Because when it is transmitting, it is listening also over the channel. So for detection of the collision, transmission and listening over the channel has to be done simultaneously. This is a requirement. तभी आप कोलिजन डिटेक्ट कर सकते हैं. ओके, कोलिजन पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये तो बात की बात है, पर आपको पहले प्रिपेयर रहना चाहिए कि आप कोलिजन डिटेक्ट कर सकते हैं. सो N4 is, because it is doing the transmission, so it is listening also over the channel at the same time. And now because it is listening, it can detect the collision. And once N4 has detected the collision, okay, so what it do after detection of the collision, it stops its transmission and sends another signal which is known as a jamming signal, which reaches to N1 and tells that, okay, the collision has happened. So N1 also stops its transmission. Okay, so there is a special signal which is known as jamming signal.
Jamming signal tells to all the nodes which are doing the transmission that some collision has happened. Okay. And why this jamming signal is required? Because some node may not get the collide signal. इसलिए इसकी जरूरत है. Okay. So the node which is doing the transmission detects the collision either through the collide signal if it reaches to that node, or through a jamming signal, because a node which is doing the transmission, if any node gets that collide signal, it transfers a jamming signal. So every node which is involved in transmission can know that, okay, this I should stop my transmission because collision has happened. Okay, so that is known as collision detection. So this is SISMA and CD. Carrier sense, multiple axis, इतना हो गया, और collision detection. अब 5 मिनट का गैप कर लेते हैं, फिर आगे का बताता हूँ. Excuse me, sir. हाँ बताओ बेटा. Sir. Yes, sir. Earlier you said that a jamming signal will only be sent when a collision is detected, right? The reason is that some node which is doing the transmission may not get the collide signal. So to inform that node, a special signal which is known as jamming signal is sent. So jamming signal is sent irrespective of the collision, or it's sent only when a collision occurs? Only when a collision occurs. And see, if there are 4 or 5 nodes which are involved in transmission, इसका मतलब वो पैकेट ट्रांसमिशन करना चाह रहे हैं, फ्रेम को ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना. अब 4 में से 2 नोडों ने या 1 नोड ने डिटेक्ट कर लिया कि भाई कोलिजन हो गया है, बाकी नोड नहीं कर पाए, मान लीजिए उन तक नहीं पहुंचा सिग्नल. ओके, सो ये नोड क्या करता है, टू इन्फॉर्म द अदर्स कि भाई कोलिजन हो गया है, इट सेंड्स अ जैमिंग सिग्नल. एंड वंस द नोड्स which are doing the transmission, वो बाकी 4 भी ट्रांसमिट कर रहे थे, तो उनको जैमिंग सिग्नल मिला, तो उनको पता लग गया कि भाई कोलिजन हो गया है वायर के ऊपर, बस के ऊपर. ठीक, अब कोलिजन हो गया है तो अब उनको डिटेक्ट हो गया, सबने डिटेक्ट कर लिया कि भाई कोलिजन हो गया है. अब कोलिजन होने के बाद अब क्या करें, वो बात डिस्कस करते हैं. पहला प्रॉब्लम ये थी कि जो भी नोड ट्रांसमिट कर रहा है उसे पता लग जाना चाहिए कि कोलिजन हो गया है, क्योंकि वंस इट नोस की कोलिजन हो गया है, इट कम्स टू नो कि भाई फ्रेम जो तुमने ट्रांसमिट किया था अब तक 100 बिट्स ट्रांसमिट करनी थी, 30 बिट्स ट्रांसमिट कर दी थी और बाकी 70 उसी के पास थी, तो क्या यार फ्रेम बेकार हो गया, ट्रांसमिट एक्चुअली नहीं हुआ. तो अब आगे क्या करना है फिर देखते हैं. बट पहला है कि डिटेक्ट हो गया है, और डिटेक्ट किसको करना है, जो ट्रांसमिट कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोलिजन होता है तो जो किसी का भी ट्रांसमिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ. इफ 3 नोड्स आर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन, इसका मतलब तीनों में से किसी का ट्रांसमिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ. अगर 4 नोड है इन्वॉल्व, 4 में से किसी का नहीं हुआ. अगर 2 नोड इन्वॉल्व है तो 2 में से किसी का ट्रांसमिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ. वंस द कोलिजन हैज बीन डिटेक्टेड. Sir, one more question, sir. If you don't mind. Sir, in the हाँ, former ये case, क्वेश्चन पूछने में कोई परेशानी नहीं, ना पूछने का. yes, sir. Yes, sir. In the former case, you gave an analogy of how the horizontal velocity of a signal might be less when it collides. So, in that case, you said that the entire signal or the entire collided signal might not reach to the receiving node. So, in that case, when the collision is not detected, so how will the nodes? How will the 2 nodes know that that there needs to be the transmission of a jamming signal so as to inform the receiving node of a collision? And this distance of the wire, do you think, or do you want to say that out of 3 or 4 nodes which are doing the transmission, there is a possibility that any node do not gets the collide signal? Is it? No, sir. Before you said that, when you said that N1 and N4, before you gave the example of the transmission of signal between N1 and N4, and you said that there might be a case where
the collided signal might not reach to N1, right? N1, So yes, sir. So in that case, how will the two nodes know that there needs to be a transmission of jamming signal or jamming signal? So because N4 detected the collide signal. N4 detected the collide signal, right? So N4 knows that it has to send a jamming signal. The node which has detected the collide signal, that node knows now I need to transmit the jamming signal. but sir, how does N4 like detect that there is? I mean, the node that transmits is the one that detects the collision, or is it the receiving node that detects collision? No, the node which is doing the transmission detects the collision. In this case, N1 is transmitting and N4 is transmitting. In this case, N1 is transmitting and N4 is transmitting. Both are transmitting. Okay. Yes, sir. So if both are transmitting, then maybe N4 is transmitting to अच्छा receiving वाला भी एक बना दें इसमें. Receiving वाले को जरूरत नहीं है जानने की. N4 क्वार्टरनिंग बना लेते हैं. यार ये तो चल रही है. sir, if both N1 and N4 are transmitting, then how does 1 minute. yes, sir. N4 suppose N1 is transmitting suppose to N3, है ना? यहाँ से यहाँ N1 is trying to transmit to N3 and N4 is trying to transmit to N2. ठीक है? So N2 and N3 are receiver, but receiver is don't need to know whether collision has happened, not happened, doesn't matter. N1 is transmitting and N4 is transmitting. N1 and N4 need to know कि collision हुआ है कि नहीं, because if when they come to know the collision has happened, they are in a state now to know कि now my packet has not been transmitted. आप पैकेट ट्रांसमिट कर रहे हैं, आप फ्रेम ट्रांसमिट कर रहे हैं, राइट? तो आपको एक पता तो लगना चाहिए कि भाई ट्रांसमिशन आपका फ्रेम हो गया कि नहीं. The moment you detected कि कोलिजन हो गया है, that moment tells you कि भाई पैकेट ट्रांसफर नहीं हुआ आपका. Your packet has not been transmitted. ठीक है? तो N1 रिसीवर नहीं है, N4 रिसीवर नहीं है. N1 is transmitter, N4 is transmitter. Fortunately दो लोग ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहे हैं और मीडियम वही है, सेम ही है, उसी के ऊपर So sir, in this case, both N1 and N4 will receive an information that a collision has occurred, right? So N4 suppose N4 has detected कि collision has happened. जो मैं बोल रहा था कि N4 ने डिटेक्ट किया कि collision happened, right? So now N4 N1 ने डिटेक्ट नहीं किया क्योंकि collision जो collide signal था वो that didn't reach to N1, ये यहीं तक आते आते खत्म हो गया मान लीजिए. हाँ, तो वो तो ट्रांसमिट कर रहा है N1, तो उसको नहीं मालूम कि कोलाइड हो गया है आगे यहाँ तक खत्म हो गया कोलाइड सिग्नल, तो वो तो ट्रांसमिट करता रहेगा. अगर if N1 do not know कि उसके पास 100 बिट थी और जब कोलाइड हुआ सिग्नल till that time it has transmitted 30 out and 70 was more. There were still 70 bits left with N1 which required transmission, right? So what N1 will do if it do not know कि collision हो गया है? N1 will go on doing transmission, right? N1 will continuously do the transmission of those remaining 70 bits, right? But obviously, Yes, sir. agar out of 100 bits which N1 was trying to transmit, right? If 5 bits get collide because of this collision, और उसको पता नहीं लगा, but 5 bit collide हो गई, तो remaining 95 N3 तक पहुंच भी गई, they are of no use.
all 100 bits should reach to N3. Then only N3 will be in a state to know if somebody has transmitted a frame to me. Otherwise not. Okay. So Yeah, N1 yes, sir. है ना, तो N1 रिसीवर नहीं है, N1 भी ट्रांसमीटर है और N4 भी ट्रांसमीटर है. The only problem is that N1 and N4, when they are transmitting, they should know that they have transmitted all 100 bits. If we take 100 bit is the size of the frame. So all 100 bits have been transmitted safely. This is the problem. Sir, can we say that the transmitting nodes, I mean, the collision will be detected by that transmitting node by that transmitting node which is nearer to the collision, Yes. to the point of collision, or is it the other way around? The point of collision. Okay, so say if there was a collision near N3, so N4, since it is nearer to the point of collision, it will detect the collision first. Only N1 and N4 can detect the collision. N3 and N2 are not going to detect the collision because they are receiving, they are not doing any transmission. So only N4 and N1. Now, if you want to say ki, is there any possibility that N4 and N1 both of them do not, the collide signal do not reaches neither to N1 nor to N4. But that possibility is eliminated when the distance of the wire is taken. Understood, sir. I got it. I got the point. है ना, डिस्टेंस आप चूज कर रहे हैं जब वायर की, तो इतना चूज किया जाता है कि किसी एक पे तो पहुंचेगा ही कोलिजन. Got it, sir. It's clear now. Yes, sir. It's clear. तो 5 मिनट गैप कर लेते हैं, फिर बताता हूं कि उसके बाद क्या होगा.
So nodes which were doing the transmission, they found that a collision has happened. Now what they do, the idea is very simple, that if N1 is doing the transmission, suppose N3 is doing transmission, N4 is doing transmission. All three nodes, they found at a particular time that collision has happened. So right, N1 came to know कि भाई 100 bits transmit करनी थी. We have taken the size of a packet, suppose 100 bits. Okay. So N4 को भी 100 bit transmit करनी थी and N3 को भी 100 bit transmit करनी थी. So they stopped their transmission, knowing that collision has happened. This means at least one bit has been is collided. So if any bit out of 100 bits get collided, this means the packet cannot be transferred, right? Or the frame cannot be transferred. So now what they do, they stop their transmission and now they will try again. Okay, so everybody stop transmission and now what they do, they try again. But if immediately they try to do the transmission, obviously because all three are involved in transmission, the collision will take place. So in this fashion, they will not be able to transmit anything, right? बार-बार collision हो जाएगा और कोई transmit नहीं कर पाएगा. So now what they do, independently, everybody, what they do, N1 choose a random waiting time. Suppose N1 chooses a random waiting time of 2 seconds or 2 microseconds, अगर microsecond में चल रहा है, हाँ? N3 choosing a random waiting time 1 microsecond, suppose, and N4 choosing a random waiting time of 4 microseconds. Okay. There is no central coordinator, please remember. So N1 it randomly chooses a random waiting time. Suppose ने 2 units select किया, N3 selected 1 unit and N4 selected 4 units of waiting time. Okay. And while waiting, they are continuously sensing the channel also. कि भाई channel free है कि नहीं. Okay. So now who will start transmission first? Waiting time किसका सबसे कम है? 3. And 3 का सबसे कम waiting time है. Okay. So it will start retransmission first. Okay. So N3 will start retransmission. And obviously at that, when N3 start retransmission, N3, N1 and N4 will come to know that somebody is transmitting. So what they do, they halt their timers. जो waiting था, इसका कितना बचेगा? Out of 2 will remain 1 and out of 4 will remain 3. Okay, when N3 started transmission. So N3 started transmission, so N3 will go first. And N1 will hold and N4 will hold, right? So N3 ने transmit कर दिया. After that, who will transmit? N1 will transmit. So now, because waiting time of N1 will finish, and N4 का waiting time जब N1 का finish हुआ, at that time N4 waiting time was 2 units. Okay, so N4 will still hold and N1 will do the transmission. तो पहले N3 ने किया and then N1 ने transmit कर दिया, and then N4 will do the transmission. Okay, this is the basic idea of if a collision takes place, then what should be done. Now, how this idea is implemented, we say that the node
N1, N2, N3, which are involved in transmission, what they do, they go to exponential back off. They know they go to exponential back off. ये जो काम कर रहे हैं वेटिंग करने का, इसको बोलते हैं exponential back off. Okay, and what is the idea of exponential back off? The idea is that every node will select from a window of 2, from a window of 0 and 1, 0 and 1. So everybody will choose a random waiting time from a window of 0 and 1, right? And will try. They will wait for a random waiting time which has been chosen from 0 and 1. And then will try to do the transmission. If their transmission collide again, पहली बार अगर collide किया तो 0, 1 में से choose किया. If next time collide हो गया, then what they do, they will double the window. That means from 0 to 4, they will choose. So obviously यहाँ पर 0 और 1 से choose करेंगे तो किसी ना किसी का transmit collide हो जाएगा, like N1, N3, N4. 3 नोड ट्रांसमिट करने का ट्राई कर रहे हैं, 0, 1 से चूज किया. So there is a possibility कि collision हो जाए, but कोई जरूरी नहीं है कि possibility हमेशा ही रहे, because if say N1 chooses 0, N3 chosen 1 and N4 chosen 1. They are independently choosing from a window of 0 and 1, a number from 0 and 1. Okay, how long they need to wait? So if somebody chooses 0, that means they do not need to wait. Somebody chooses 1, it will wait for 1 unit of time, and 4 has chooses 1, so it will wait. So N1 can do the transmission still without collision, but obviously when N3 and N4 will try, their transmission will collide. Okay, so now what N3 and N4 will do, because their transmission has collided second time, so now they will choose a window from 0 to 4. जो 0 और 2 की विंडो थी, 1 की विंडो थी, they will increase it, will double that window. इसीलिए उसको कहते हैं exponential back off. उसको increase double कर देते हैं. So from 0 to 4, N1 will choose a waiting time and 4 will choose a waiting time. If they choose a different waiting time, they can do the transmission. But because independently they are choosing a waiting time from 0 to 4 नहीं करना चाहिए, 0 to 3 हो गया ना, डबल किया आपने जब, तो from 0 to 3, if both of them N1 and N4 they have choosing the same, they are choosing randomly a waiting time from 0 to 3. If they choose the same waiting time, then their collision will collide, and if their collision will collide, then what they do next time, the window size will increase from 0 to 7. So now, next time N3 and N4 will choose from 0 to 7, a random waiting time. If they choose a different waiting time, then they can do the transmission, right? So this is known as exponential wait back off. So every node which are involved in transmission, nodes which are trying to do the transmission, which are involved in transmission, once they come to know that there is a collision, so what they do, they go to the random waiting time. They go to a exponential back off algorithm. And what is the exponential back off algorithm? Every node which gone to exponential back off algorithm, what it do, it chooses a window, a random waiting time from 0 to 1 initially. If a collision happened second time, then it doubles that window. That means in first chance 0 to 1. Second time they will be choosing a window from 0 to 4. If again the collision takes place,
or again they detect there is a collision when they are trying to do the transmission. What they do? They choose a window from 0 to 7, next time 0 to 15, next time 0 to 31. So exponentially that window from where they are, a particular node is selecting a random waiting time. Okay, the random number, that window of random number increases after every collision. Okay, so initially the value is 0, 1, next time 0 to 3, next time 0 to 7, next time 0 to 15, next time means on next collision, detection of next collision 31, in this way. Okay, so नोड N1 उसने कोशिश की पहली बार ट्रांसमिट करने की, कोलिजन हो गया, then it will choose a random number from 0 to 1 and will multiply by a unit time t. For that time it has to wait, right? N1 found when it was trying to do the transmission after waiting for either 0 or 1, again collision has happened. So now N1, what it do? किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपनी विंडो को डबल कीजिए and select a random waiting time from 0 to 3, right? So मान लीजिए उसने 2 select किया, so it waited and 2 next time waited for 2t time and again tried to do the transmission, and when it was trying to do the transmission again it detected कि collision हो गया है. Okay, so अब second time collision हो गया. Now what it do? It doubles this window size from 0 to 7. Again chooses a waiting time. Suppose this time it has chosen 5t. And after waiting for 5t times, it again tried to do the transmission of those 100 bits. Frame हमेशा दोबारा next time शुरू से transmit करना शुरू करना है. Okay. Again try to do the transmission of that frame. If it fails, fail कब होगा? If collision again detect हो गया, then it increases the window from 0 to 15 and chooses a random waiting time. Now this time it has chosen suppose 10t and try to do that. After waiting for 10t time, it try to do the transmission. If it is able to transmit the frame, fine. If it fails, next time doubles the window and chooses. So this is known as exponential backoff. किसी को समझ में ना आता है आया हो तो बताए. Exponential backoff. Before trying next time, you need, if a node detects collision, so before trying to access the channel, before trying to do the transmission next time, what it do? It selects a random waiting time and how much it for how long it need to wait, that is to be decided from a window, and that window in event of every collision increases or doubles. So every time the possibility of choosing for a waiting time increases. This means if there are more nodes which are trying to do the transmission, there is a possibility of high collision and there is a possibility of going to a bigger random waiting time window from where the waiting time is to be selected is more.